आज हम बात करने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के लव रिलेशनशिप के बारे में। हाँ भाई, चाइना और पाकिस्तान को तो एक दूसरे से प्यार है। आखिरकार चाइना पाकिस्तान का अब्बू कम बॉयफ्रेंड जो ठहरा। और आपने कई पाकिस्तानियों को देखा ही होगा उनके प्रोपेगेंडिक चैनल्स पर कमेंट करते हुए, चाइना पाक दोस्ती जिंदाबाद। तो आज हम सच में देख लेंगे क्या सच में चाइना और पाकिस्तान का है, या फिर चाइना बना रहा है पाकिस्तान को चूतिया। तो आपने तो शिनजियांग प्रोविंस का नाम तो सुना ही होगा, और ब्रिक्स समिट के बारे में तो सुना ही सुना होगा। तो आज उस पर ही बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिंगजेंग, तिब्बत और नॉर्दर्न मंगोलिया मिलाकर नियरली आधा से ज़्यादा चाइना हो जाता है, यानी आधे से ज़्यादा चाइना का फोर्सफुली ऑक्युपाइड है। ना हम आज तिब्बत और नॉर्दर्न मंगोलिया पर नहीं जाएंगे, बात करेंगे तो सिर्फ जिंगजेंग प्रोविंस का। सो यू गेस्ड इट राइट, जिंगजेंग प्रोविंस मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, और जहां मुस्लिम वहीं पर ही लफड़ा। तो अकॉर्डिंग टू दैट चाइना ने वहाँ पर कुरान बैंड करवा दिया। कुरान, बुरखा सब बैंड, इस्लाम बैंड। पाकिस्तान तो अल्लाह का बनाया हुआ देश है ना, और उसका दोस्त थी अल्लाह के इस्लाम के खिलाफ। नाइस फ्रेंड यार, पाकिस्तान नाइस फ्रेंड। अरे कुरान और बुरखा तो छोड़ो, उन्होंने तो रमजान की फास्टिंग भी बैंड करवा दी ना भाई। सुन भाई, तुझको खाना पड़ेगा, तुझको डिग्री चाहिए ना, तो रमजान में खाना पड़ेगा ना भाई। खाना तो पड़ेगा, तुझको खाना पड़ेगा। चल भाई, क्या खा ले। क्या खाएगा? तंदूरी खाएगा? क्या खाएगा? वरना मैं आर्मी भेजता हूँ तुझको खिलाने के लिए। मैं आर्मी भेजूंगा तुझको खिलाने के लिए। और चाइना ने अपनी आर्मी भेज भी दी उनको खिलाने के लिए। कितना अच्छा फ्रेंड है ना चाइना। और बाद में तो उन्होंने प्यार से कुरान, बुरके सब निकाल कर जला डाले। कितना अच्छा फ्रेंड है चाइना। वाह, गुड फ्रेंड यार चाइना। ओह हाँ, वी इंडियंस आर वेरी जेलस ऑफ योर फ्रेंड भाई, वी आर वेरी जेलस। ओरे बाबा रे, चाइना यार, नहीं देखा चाइना जैसा इतना अच्छा फ्रेंड यार। पाकिस्तान तुम्हारे लिए तो इंडिया की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा दोस्त ही काफी है। तो अब हम देखेंगे अल जजीरा का एक न्यूज़, फिर देखेंगे एक चाइना अनसेंसर्ड का, फिर दोबारा बात करेंगे। सो लेट्स सी। A worried government has turned out the troops to ensure violence on the streets won't happen again. Police are on every corner, on every block. And 40,000 surveillance cameras are now installed across the city, even on the buses where some of the attacks took place last year. In July of 2009, when soldiers marched through these streets, we wondered how long such tight security could last and questioned the sustainability of such measures. Well, now we have the answer. China can control an entire city and can control it for an entire year. But in the beginning, authorities were caught off guard, and for several days last year, chaos reigned. First, the Uyghurs, who torched buses as terrified passengers ran off, followed by their community's women, rising up to protest the arbitrary nighttime arrests of their sons and husbands, most of them innocent, they told us. But police, in their attempt to track down rioters, rounded men up in the thousands. The ethnic Han Chinese majority then retaliated, heading to Uyghur neighborhoods for vengeance. The citizens' People's War on Terror. There are 56 officially recognized ethnic groups, although about 92% of people are from the Han ethnic group. But the important thing is that they all live in harmony under the loving guidance of the Chinese central government. Like Tibetans, those rooftop snipers are there to keep everyone safe. Same goes for the lesser talked about groups like the Uyghurs, a Turkic minority in the Xinjiang region. Thousands of heavily armed troops have marched through cities in Xinjiang over the past week in mass military demonstrations. As the region's deputy Communist Party chief says, it's to show the caring and strong leadership of the Communist Party Central Committee.
Also to show that all separatist activities and all terrorists shall be smashed to pieces. How will they do that? With the powerful fist of the People's Democratic Dictatorship. In short, चाइना का कश्मीर. अबे अब तो तुम लोग यहाँ पर भी मुस्लिम्स का वही हाल हो रहा है अकॉर्डिंग टू यू. तो फिर इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते तुम लोग? उठाओ ना आवाज, उठाओ. क्यों नहीं उठा पाओगे ना? तुम्हारा अब्बू जान चाइना का जो ठहरा. Of course. You know about the Chinese military's benevolence in Tibet. People in the West are pretty familiar with the political situation there, thanks in part to Gwyneth Paltrow-era Brad Pitt and notorious foam visor lover, the Dalai Lama. Well, the same kind of Chinese military benevolence happens on a regular basis in Xinjiang, too. Xinjiang is a giant region in western China with roughly the land area of Alaska. Like Alaska, it's mostly uninhabitable. And they can also see Russia from their backyards. But unlike Alaska, Xinjiang's reality shows have never really taken off. Sand road donkeys, truly an underappreciated gem. But the ethnic Uyghurs living in Xinjiang don't get much media attention compared to Tibetans. Why? Might also be because they're Muslim. Non-Muslim extremists generally, mostly moderate Muslims. But the Communist Party doesn't like moderate Islam any more than they like moderate Buddhism. Any system of belief in a higher power is seen as a threat. So how to solve this problem? For decades, the Communist Party has flooded the region with non-Muslim ethnic Han Chinese, which has now increased to 38% of Xinjiang's population. And the CCP has recently implemented a loving, big brother system of mass surveillance like grid management, face recognition software, and big data analytics. And of course, who could forget all of the things the CCP has banned in Xinjiang at various times because they're too dangerous? Beards, veils, traditional clothing, the internet, and even for civil servants, fasting during the holy month of Ramadan. Hey, fasting is dangerous. You're not yourself when you're hungry. I'm looking at you, Betty White. Now, it used to be that Uyghurs who were not fully supportive of their benevolent communist overlords were called splitists, the same term used for Tibetans. But after 9/11, the Communist Party adopted a more politically savvy label: terrorists. According to Beijing Cream, everything from the theft of sheep to a land seizure protest to a fight with knives can now be labeled as terrorism as long as Uyghurs and Han are involved in the conflict. It's led to what state-run media are calling the People's War on Terrorism. And if your neighbor turns you in for being a terrorist sympathizer, which they get a reward for, by the way, fortunately, the party has put up colorful propaganda to educate the Uyghurs about potentially terrorist activities, like sharing banned information on video CDs, or installing a satellite dish. News is dangerous. And don't wear veils, you'll be much happier without. And if those doves become a problem, why, there's always friendly soldiers nearby to shoot them down. So if you see a group of Uyghurs happily reading party propaganda in front of a Chinese flag, you can bet it has something to do with the Xinjiang party chief saying, "We shall load our guns, draw our swords from their sheaths, throw hard punches, and relentlessly beat and strike hard without flinching at terrorists." All under the watchful eye of the 40,000 security cameras set up in Xinjiang streets, public places, and mosques. And now the latest news: they're going to use GPS surveillance to keep track of every single car in the region. ब्रिक्स के बारे में तो ज्यादा बात करना की जरूरत नहीं है. चाइना ने क्लियरली चाइना का सी काटा है. वो एक तरह से बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑल द प्रोपेगेंडिक चैनल्स ऑफ पाकिस्तान, चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा सपोर्ट कर रहा है सबसे ज्यादा, पाकिस्तान सबसे ज्यादा कुर्बानियां दे रहा है. और दूसरी तरफ चाइना बोले, चल हट, तू साला टेररिस्ट है तू. नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा. पूरा दुनिया को चाइना सिर्फ यही बोल रहा, नहीं ये टेररिस्ट है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इसको.
पर अकॉर्डिंग टू ऑल प्रोपेगेंडिक यूट्यूब चैनल्स ऑफ पाकिस्तान, ना भाई चाइना हमारा दोस्त है, हमको तो बस व्यूज से मतलब है। हाँ पता है राइम नहीं हुआ, पर फिर भी पाकिस्तान की तो जली ना, पाकिस्तान की तो जली। तो अच्छा चलता हूँ, दूसरे वीडियो में जरूर मिलता। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो यार।